Welcome to all the viewers and happy Diwali to you, Shell. Good evening, Sakshi, and it's such a pleasure to welcome you back on such a fine evening. We've seen a masterclass of batting that's just happened in Bangalore by the Indian cricket team, and we've seen a masterclass of investing over the last 1 year or so as far as the Lal Street is concerned. Things are looking good, and in fact, they're about to get better. Let's, without wasting even a second of time, reach out to our guest. It's the very well-known market man, Mr. Anand Rathi, chairman of Anand Rathi Group, who's joining us in just a few seconds. Mr. Rathi is a very, very well-known face, and over the last 18 months, his company has also got listed. आनंद जी नमस्ते, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे। और संवत की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से हो जाए, इससे बढ़िया और क्या उपलब्धि हो सकती है। स्वागत है आपका। बताइए सन 2080 का संवत आपको कैसा लगता है? धन्यवाद शैल एंड साक्षी, आप लोगों को और आपके सारे दर्शकों को मैं सबसे पहले इस दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2080 जो है, मेरा मानना है कि अच्छा साल है, क्योंकि आप देखिए अभी पिछले 6 से 9 महीने में जिस तरह का बदलाव अपने देखा, जीडीपी की ग्रोथ बराबर आ रही है, इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने से रुक गई हैं। ऐसा माहौल, इंडिया का तो माहौल, और सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी ग्रोथ आ रही है वर्ल्ड में, तो सारे सुकून जो हैं वो अच्छे सुकून नज़र आ रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि 2080 भारतवर्ष के लिए, विशेषकर मैं कहूँगा, अपने लिए एक अच्छा वर्ष रहेगा। Okay. Mr. Rathi, happy Diwali to you. Thank you so much for taking the time out to meet us and to take your time out to be with us on this show. I wanted to ask you, sir, what is the biggest learning that you have picked up in the last 1 year? Because learnings also help us to grow as an investor, and I want you to part some of that learning to all our viewers today. Yes, Sakshi, I think this is a great learning which I want to share, but this is not just last year's learning. This is all the learning which I've learned in this market is the patience, I think not to time the market. Last year we have seen markets going up above 20,000 and going down below 17,000. So if you can see 15 to 18%, difference between the top level and the lowest level, I think people get frightened when markets have little bit changes, When markets come down by even 500 or 1,000 Nifty points, people get panicky. I think my advice and my experience is never get panicky. If you are invested in this market, come only if you are for a long-term money. Again, my advice is don't come for few months or 9 months or 1 year. Come for at least 3 to 5 years. And if you are there, then there is no need to time the market. Let market fluctuate on its own, because if the economy is doing well, if the corporate sector is doing well, I think there is no doubt that you will do well. And we have last so many years, 79 the Sensex started. Now, we have completed more than 40 years. And you have seen in 40 years, it has given, if you take accumulated return, more than 15% return. So I think one should be patient. One should not get worried about the fluctuations in the market. Stay invested. Anand ji, I'll just take a 1 minute detour. The pre-open trades are in front of us, and the Nifty has started exactly like Shreyas earlier, 122 points up at 19,550. Sakshi, all 10 index heavyweights are in the green, led by Tata Motors, 1% higher, 658, HDFC Bank 0.5% higher, 1500, Reliance up 0.5%, 2326, and Infosys up 0.8%, 1380. We'll keep an eye on these stocks, but it's more important to talk to Anand ji at this moment. Rathi sahab, where is fresh money going to come in as far as the new Samvat is concerned? Nifty hasn't performed much, up 8% Samvat to Samvat, but sectors like PSU banks are up 55%. Mid caps and small caps have rallied very sharply. So fresh money, when you advise to your HNI clients, where are you putting that money? Yes, I think जो आप कह रहे हैं कि अगर एक साल के लिए व्यू लेना, तो डेफिनेटली
आज के फ्लेवर ऑफ द डे सेक्टर्स कौन से हैं, तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि जैसे आईटी इज ऑन टर्न अराउंड, सो आईटी इज वन सेक्टर लोगों को देखना चाहिए जरूर. फार्मा इज अगेन अनदर सेक्टर टू लुक एट, डूइंग वेरी वेल. थर्ड सेक्टर जो अपना बैंकिंग और फाइनेंस, अभी भी मतलब दो दे हैव पिक्ड अप ए लॉट, मेरे हिसाब से अभी भी उनके लिए बहुत आगे बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंस किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो है वो जो फाउंडेशन होता है वो बैंकिंग के ऊपर होता है. और अभी जो आपने देख रहे हैं स्थिति जो बैंक्स की और एनबीएफसी की, इनकी बैलेंस शीट जितनी मजबूत देखने को मिल रही है, जितनी उनके एनपीएस कम देखने को मिल रहे हैं, जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसा अपन ने पहले नहीं देखा. तो वो एक सेक्टर जो है वो अच्छा नजर आ रहा है. वैसे मेरे मानना है शैल भाई की, चूंकि इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल विल डू वेरी वेल. क्या कई स्टॉक्स का काफी रन गए. ऑटोमोबाइल में जैसे टू व्हीलर है, दैट ऑफर्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टू व्हीलर्स में प्रॉब्लम आ गई थी, परंतु ये उतार चढ़ाव चलता रहता है. आगे आने वाले टू व्हीलर इज गोइंग टू बी अगेन लाइफ लाइन इन इंडिया. आज अफोर्डेबिलिटी एंगल से किसी गांव गांव में सर, हर घर घर में एक व्हीकल जरूर चाहिए. तो ये कुछ सेक्टर चुनिंदा जो आपने पूछे हैं, पर मेरा मानना भैया कि लॉन्ग टर्म स्टे इन्वेस्टेड. अगर आप स्टॉक्स लेना चाहें तो जरूर समझ के लीजिए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड के जरिए जाएं, ताकि एक एक आपका डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो मस्ट, विच विल हेल्प. यू मे नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स, बट यू विल गेट गुड एवरेज रिटर्न्स. Okay. Mr. Rathi, I also wanted to get a macro sense from you. Over the next 1.5 months, we're going to be seeing 5 state elections. Now, keeping in mind that, the current government in these states seems to be on the back foot, how do you think the markets will be navigating over the next 1.5 months? Very good question, Sakshi, because we have seen so many elections, and my experience has been elections are a big event. So ever before election, after elections, you will see action coming on the market. But we have analyzed for last 25 years. If you take an index 1 year after the election, okay, particularly the central government election, it has always given double-digit return. So elections have an event. India की progress हो रही है, not just because of the government alone. Governments have changed, but India has progressed because one major, strength we have is our entrepreneurship. अपने यहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं, जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काफी हिम्मत वाले हैं और रिस्क लेके. तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के चलते ब्यूरोक्रेसी अपनी इतनी इज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. ओल्ड ब्यूरोक्रेसी, ग्रोथ आएगी जरूर साक्षी. मेरा तो विश्वास है कि आगे आने वाले 10 साल गोल्डन ईयर्स है इंडिया के लिए. एंड आई थिंक पीपल, दोज यंग पीपल लाइक यू आर बोर्न एट द राइट टाइम एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया. आनंद जी, आपका जो गोल्डन पीरियड है वो भी अभी शुरू ही हो रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा पैसा भारतीय बाज़ारों में आ रहा है, इतने ज़्यादा अल्ट्रा एचएनआईज आते हैं, और आनंद राठी वेल्थ में जितना पैसा आप मैनेज कर रहे हैं, प्रभु उसकी दुगनी और 4 गुनी आपको उन्नति और तरक्की कराता हुआ दिखेगा. आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताऊं. प्री ओपन ट्रेड में आनंद जी 50 के 50 निफ्टी के शेयर हरे निशान में हैं, और एफएनओ में लगभग हम 189 शेयर्स ट्रैक करते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 हैं जो लाल निशान में हैं. तो आप समझिए कि सन 2080 संवत की जो शुरुआत हुई है वो एक धमाकेदार पारी के साथ हुई है, और यहाँ पर आप बहुत बढ़िया रिटर्न देख सकते हैं. आनंद जी, ज़रा विस्तार से चर्चा करते हैं बाज़ार के बारे में. ये जो हमने रैली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी है, पीएसयू बैंक्स में देखी है, 51-52% ऊपर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है, 37% ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है. क्या आप इनसे चिंतित हैं? क्या ये बाज़ार कुछ समय लेगा इन सारे गेन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर आगे बढ़ेगा, या एक तरफा आपको तेज़ी दिखती है? नहीं, देखिए, मैं चिंतित नहीं हूँ. इसका मुख्य कारण यही है कि ये जो भाव बढ़े हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है. परंतु ये कहना कि भाई इसी तेजी से आगे बढ़ेंगे वो संभव नहीं है बिल्कुल. कभी 50-55% ग्रोथ आगे आ जाएगी, ऐसा नहीं. ग्रोथ आएगी डेफिनेटली,
This is not something, just a spike by chance. ये बेस्ड ऑन इनकी रियल ग्रोथ जो आ रही है उस सेक्टर में, इसीलिए ग्रोथ आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि इवन देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप, मेरा मानना हमेशा लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि भाई जिसका छोटा बेस है उसकी ग्रोथ ज्यादा आ सकती है, और ये वही है। तो हालांकि होता है कि भाई मिड कैप की सारी कंपनियां इतनी अच्छा शायद नहीं करें, परंतु एज ए ब्लॉक, मिड कैप स्मॉल कैप जितनी तेजी आई है उससे कोई झुकेगा नहीं। हमारा अभी भी हम लोग बुलिश हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, कि उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि एक्चुअली लार्ज कैप में जल्दी से सैचुरेशन आता है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट जितना आना आ जाता है, परंतु मिड कैप और स्मॉल कैप में आगे आने वाले समय में, इस एक साल और आगे वर्षों में मुझे उनमें अच्छी ग्रोथ आती नजर आती है। Okay. Mr. Rathi, I would request you to stay on with us. I'm also now joined by another guest of ours on the show. Mr. Akshay Bhagwat now joins in. He is the Senior Vice President Derivatives at JM Financial. Mr. Bhagwat, happy Diwali to you. Thank you for taking the time out. The first question that comes your way is, what should one do with the Nifty after this gap up that we are looking at? Happy Diwali to you, Sakshi, and Shailji, and also to Mr. Rathi. And to all the viewers of Business Today, may your portfolios be bright and sparkle as the lights of Diwali. So to answer your question, Sakshi, about the Nifty index. Well, it's a very auspicious day and a very nice way to start the Muhurat somewhat 2080 for the Nifty index. As I see right now, I think today, as we have seen the past couple of years, Nifty has always been strong on the Muhurat trading sessions. So, buying is what I would recommend at 19,540. I think if you were to see from a positional or a medium-term perspective, there might be challenges here and there, but I think if there is only one way for the index to go, and that is on the upside. So I am bullish on the index. I'm targeting all-time high as we head into 2024, and buying is what I would recommend to all the investors of Business Today. Right. Let's just look at the opening rates. The Nifty is up 94, 95, 19,525 in front of you. It's a 150 point start up for Nifty Bank, 43,978. Both the IT and the Nifty 500 index are in the green. Amongst the index heavyweights, it's Infosys 1% higher, 1383. Sakshi, one good thing is that all 10 index heavyweights are in the green. Reliance 0.3% higher, 2323. HDFC Bank 0.4% higher, 1498. All other private sector banks, ICICI Bank is in the green, 941, up 0.2% higher. Axis Bank is also in the green, 1029. That's how markets have started. Within the Nifty, the top gainer at the moment is Coal India, 3.2% higher, 334. Aisha Motors 1% higher, 3578. NTPC taking it away 1.4% higher, 246.50. Let's look at NSE 500 again. It's a blowout on the Bombay Stock Exchange, 6% higher, 2140. We have very strong gains coming into CDSL, 1830, 3% higher. Medanta 4% higher, 940. Coming to you, Anand ji, अक्सर दस्तूर रहा है दिवाली पर और ख़ासकर मुहूर्त ट्रेडिंग पर कि कुछ ना कुछ ख़रीद के निवेशक अपने घर ले जाता है, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो फंड हो, चाहे वो बहुत अच्छी राय हो। राय आपने अच्छी दे दी, अब बताइए खरीदा क्या जाए। देखिए, आपको पता है मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं कमेंट करता हूँ, परंतु जैसे मैंने सेक्टर्स बताए उसमें आदमी अगर देखे और उसमें करे इन्वेस्ट, तो डेफिनेटली देखिए अगले आने वाला एक वर्ष और कई वर्ष मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये गोल्डन पीरियड इंडिया का अब चालू हुआ है, जिसको कहना चाहिए, जिसमें जो है अगर 25 साल में जाके अपने 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए या 30 ट्रिलियन की हो जाए, तो देखिए कितना बदलाव उस समय आपको नजर आएगा। उसका एडवांटेज लेने के लिए आदमी को अभी से ही मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। All right.
On that note, Mr. Rathi, thank you so much for sharing with us such valuable insights on Diwali. Here's wishing you a very happy Diwali to your team, to your family members yet again. And thank you so much for speaking to us on this auspicious occasion as well. Ladies and gentlemen, we'll just take a very short break right now.